As the city slows down under grey skies, we checked into Radisson Bengaluru City Centre for a weekend of comfort, flavor, and relaxation. Our stay began with a warm welcome and a spacious, pet-friendly room overlooking the serene Alsur Lake. तो गाइस हम आ गए हैं हमारी प्रॉपर्टी पे और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये रूम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। सो लेट्स चेक इट आउट। सो अंदर आते ही आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे स्टोरेज मिलने वाला है और बाथरूम वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे आप देखोगे तो स्नैक्स रखे हुए हैं। दिस इज़ मिनी बार एरिया और यहाँ पे भी 2 कैबिनेट मिलते हैं एंड कॉफ़ी मशीन भी रखी हुई है। एक काफ़ी यूनिक चीज़ देखो, ये है टॉर्च। तो देख सकते हो टॉर्च भी रखा हुआ है और यहाँ पे भी ऊपर काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेसेस मिल जाएगी। अगर राइट में देखते हैं तो सीधा मिलता है बहुत बड़ा मिरर और इस तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पे है बैगेज रखने की जगह। और ये देखो गाइस रूम कितना बड़ा है और वहाँ पे ऐश्वर्या अपनी फेवरेट स्पॉट पे ऑलरेडी। राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे पहले मिलता है शावर एरिया, यहाँ पे टॉवल्स और चीज़ें रखी हुई है। और यहाँ पे आपको मिलता है वाटर क्लोजेट, तो ये भी काफ़ी सही है। और इसके अपोजिट में मिल जाता है बेसिन, यहाँ पे भी बड़ा सा मिरर लगा हुआ है एंड देयर इज सम क्यूट ग्लासेस। और एक चीज़ देखो, ये कितने सुंदर यहाँ पे प्लांट्स रखे हुए हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारी किट्स मिल जाएंगी, शावर कैप, डेंटल किट, शेविंग किट एंड वैनिटी किट। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक डाइनिंग टेबल और देखो, सो ग्रेट हेल्थ इन अ नटशेल, दैट्स व्हाई इट इज़ GRT। तो यहाँ देखो एलिमेंट्स भी रखे हुए हैं। यहाँ पे मिल जाएगा टेलीफोन, एक लैम्प और सुंदर सा डेकोर। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है एक छोटा सा सोफ़ा जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है और कुछ फ्रूट्स, यहाँ देखो फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स दोनों भी रखे हुए हैं और साथ में कुछ कुकीज़ भी है, ये अभी मैं ट्राई करूँगा। हियर यू हैव स्विंगिंग काउच काइंड ऑफ अ थिंग, जैसे आर्म चेयर होती है वैसा ही है ये, देखो स्विंग होता है। और यहाँ आपको मिलता है बहुत बड़ा टीवी और ये देखो कितना क्यूट है, यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है और ये देखो ग्रीन काइंड ऑफ, ये पूरा इन्होंने पत्तों से बनाया हुआ है। और ये है कुछ स्टफ़ यहाँ रखा हुआ है, सम चॉकलेट्स एंड देखो एक स्पेशल मैसेज भी लिखा है, डियर गेस्ट दिस स्पेस वॉज प्रिपेयर्ड ऑन गोल एंड दैट इज़ योर हैप्पीनेस, एन्जॉय योरसेल्फ। इतना सुंदर लग रहा है, सी दिस व्यू। और इस रूम की जो खास बात है वो अभी मैं दिखाऊंगा आपको और वहाँ पे ऑलरेडी ऐश्वर्या ने कब्जा कर लिया है। सो ये जो है ये इतना बड़ा बाथटब कभी आपने देखा है? मैंने तो नहीं देखा, पर इसमें पक्का नहाने में बहुत मजा आने वाला है और इतना बड़ा है कि 2 लोग आराम से फिट हो जाएंगे इसमें। बेसिकली जो भी बाथटब के साथ चीजें लगती है सब कुछ दे रखी है। सो अपार्ट फ्रॉम द बाथटब, you know what's the best part of this room? You can check it out through the window. It's like 180-degree view of the Alsur Lake. Let's check it out. Whether you're here to work, relax, or simply take a breather, it's the perfect retreat. and the best part, waking up to peaceful sunrises over Alsur Lake or spotting the beautiful Gurudwara right from your window. कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपको ये रूम कैसा लगा है। तो गाइस बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हमने मंगाया है ये पेने वाइट सॉस पास्ता और ऐश्वर्या को चाहिए था ये फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस। और हमेशा मैंने देखा है बहुत टेस्टी होता है रेडिसन का, तो इसको भी ट्राई करने वाले हैं। और यहाँ से अभी ऐसा व्यू आ रहा है। सो अभी 5 बज गए हैं और अभी सीधा चलते हैं अपन हाई टी के लिए रूफटॉप पे। लेट्स सी यू एट द हाई टी। We began our culinary journey with a curated Saturday high tea. A cozy afternoon escape with serene lake views. Smoked salmon.
take in stunning views of the city skyline and Alsur Lake. With 24/7 access to the rooftop pool, the perfect spot to start or end your day. After a refreshing swim, it's time to kick back. Plush bedding, warm lighting, and all those little touches that make you feel at home. Relax and rejuvenate with a spa treatment at Bodhi Spa. Or stay active anytime with access to the fully equipped round-the-clock fitness center. We even joined an interactive cocktail making session. A fun, hands-on way to end the evening. Let's garnish it with rose petals. Wow, cinnamon is ready. Cinnamon, our signature cocktail is ready. Cheers. Aishwarya is now trying the cocktail that I just made. It's fruity and it has the sweetness and the cinnamon flavor. Like it has a lot of cinnamon and sweet flavor. The sweetness kicks in the start, but in the end, the bitterness kicks in. So yeah, I liked it. See how well it is cooked. And this shorba is like crazy. I'll just add some coconut oil. It is called Pal Katti Inji roast. Pal Katti means cottage cheese. Pal means milk in Tamil. Katti is cubes. Dinner at Kariteri was a highlight. An exquisite fusion of South Indian street flavors with international finesse. Guys, ये है जवार अरीसी वेल्ला पायसम. दिस इज बेस्ड ऑफ जो हमें साबूदाना पता होता है, और वेल्ला यानी होता है जैगरी, लेकिन ये बड़ा है साबूदाना, देखो. एंड दिस इज कवनी अरीसी कलपति हलवा मेड अप ऑफ ब्लैक राइस. And breakfast. The Great Sunshine breakfast blends health, taste, and sustainability. With vitamin D rich dishes and locally sourced ingredients. जो नॉर्मल अपना ब्रेकफास्ट होता है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन एंड फ्रूट्स ऑप्शंस, और उसके अलावा यहाँ पे सदर्न स्पेशलिटीज भी है. जैसे कि आप देख सकते हो, ये है रागी कंजी. दिस इज ओवरनाइट सोप, सो लेट्स ट्राई दिस आउट. Now we are very excited because हम जा रहे हैं एक स्पेशल ब्रंच के लिए. So let's go to Curry Theory and have our special brunch.
गाइस वो है एंट्री रेडिसन की वहाँ पर, और यहाँ से अगर आप वॉक करते हुए आते हो तो यहाँ पर ही आपको गुरुद्वारा मिल जाएगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसका मैंने रूम से आपको व्यू दिखाया था, कितना सही लग रहा था। अभी हम जा रहे हैं लेकिन चर्च की ओर, सो यहाँ से चलते हैं बाय वॉक। चलते चलते हम आ चुके हैं 1MG मॉल के पास, और एकदम सामने में ही है। हार्डली 5 मिनट्स लगे थे पहुंचने में। तो फाइनली गाइस पहुंच गए होली ट्रिनिटी चर्च। तो गाइस धूप कभी कभी ज़्यादा हो जाती है बेंगलोर में, तो सनी डे अगर है तो आपको अम्ब्रेला तो कैरी करना ही चाहिए। और ये देखो ऐश्वर्या को फाइनली जापान का अम्ब्रेला यूज़ करने का मौका मिला है ना। बट या इट्स गुड वेदर, सो यू कैन डेफिनेटली कम टू चर्च एंड ऑल्सो एक्सप्लोर द मॉल फॉर शॉपिंग। From cozy rooms and serene lake views, To indulgent dining and rejuvenating spa sessions, Radisson Bengaluru City Centre is the perfect city escape. Till next time.